अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बना रही हूँ माश की दाल और ये दाल को मैंने धो के कुछ देर के लिए भिगो के रख दिया था और अब मैं इसको बॉईल करने वाली हूँ। दाल जब आधी बॉईल हो जाएगी तो फिर आपने इसको उतार देना है और साइड पे रख देना है। सारे मसाले डालने के बाद आपने अच्छी से मसाले की भुनाई करने के बाद थोड़ा सा पानी ऐड करना है ताकि लहसुन अदरक का जो एक स्मेल सी होती है वो भी कंट्रोल में आ जाए। और इसको ढक के 5 मिनट्स के लिए रख देना। अब मैं इसमें बॉईल की हुई दाल को जो मैंने साइड पे रख दी थी, अब ये मैं ऐड करूँगी इसके अंदर।